dear parents. Today is a very special Saturday as we all have gathered here to celebrate Parents' Day. It is rightly said, one of the greatest titles in the world is parent, and one of the biggest blessings in the world is to have parents to call mom and dad. No technology can replace our parents. No love is greater than mom's love, and no care is greater than dad's care. A parent's love is wholesome. We never know the love of a parent till we become parent ourselves. We have to agree that our life is like a roller coaster which has happiness and sadness. But our parents always try the best to give it to in our life. माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं. The depth of the love of the parents for their children cannot be measured. It is like no other relationship. It exceeds concern for life itself. The love of the parent for a child is continuous and transcends heartbreak and disappointment. Let's hear from our dearest friend Master Aditya Dwivedi from 10th B about his views on Parents' Day. Good morning everyone. My name is Aditya Dwivedi and today I am going to give a speech on Parents' Day. Parents are the first teachers and God on earth for their children. It is their unlimited love, unending care and unaccountable selflessness that they pour upon us and give us the strength to stand against all tall odds. There are two souls who bring up their children every second, every minute and every day. During each of those seconds, they give their child unlimited love, unending care and unaccountable selflessness. Forever, whatever or whoever we become in life, our parents always leave a perennial imprint in our soul. It is because of them we are ambitious. It is because of them that we are humans. It is because of them that we desire for our passion of success. Our parents are our greatest treasure and gift. Because of them we are nothing, nothing at all. These words or thought cannot sum up the parents' love. They can only remind us how much they have done for us. They have done so many sacrifices for us. We can only say and repeat, Mom, Dad, I love you. Now I welcome Ms. Khushbu Singh to share her views on Parents' Day in Hindi. नमस्ते, मैं खुशबू सिंह पेरेंट्स डे पर कुछ कहना चाहती हूँ. आपने आज तक मदर्स डे, फादर्स डे के अलावा कई अन्य दिन सेलिब्रेट किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष जुलाई माह के आखिरी इतवार को देश समेत पूरी दुनिया में पेरेंट्स डे क्यों मनाया जाता है? वैसे दुनिया के कई देश में पेरेंट्स डे को अलग अलग तारीखों यानी दक्षिण कोरिया में 8 मई, वियतनाम में 7 जुलाई है, जबकि भारत और अमेरिका में जुलाई के अंत यानी चौथे रविवार को पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. भारतीय परंपरा में माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपनी ख्वाहिशों और जरूरतों को भी समर्पित कर देते हैं. इसलिए माता पिता को बच्चों का सबसे बड़ा शुभ चिंतक भी माना जाता है. पेरेंट्स डे को मनाने की शुरुआत साल 1994 में हुई थी. पेरेंट्स डे यानी अभिभावक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य माता पिता की बच्चों के जीवन में प्रतिबद्धता, पालन पोषण और पहचान बनाने में विशेष भूमिका को सम्मानित करता है. इसके साथ ही बच्चों और अभिभावक के बीच प्यार और समझ को बढ़ाकर परिवार में आपसी तालमेल को मजबूत करना होता है. इस दिन बच्चों अपने पेरेंट्स और पेरेंट्स सम्मान लोगों को अपना फूल, कार्ड्स, पेंटिंग, गिफ्ट्स करते हैं. मैं कुछ कविता कहना चाहती हूँ. पापा का है प्यार अनोखा, जैसे शीतल हवा का झोंका. माँ की ममता सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे न्यारी. फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता. मिलते हैं लोग हजारों, मगर हजारों गलतियाँ माफ करने वाले माँ बाप. Mom and Dad
I grew up cocooned in your love, comforted by your hugs and motivated by your lives. And I wouldn't have it any other way. Thanks for everything. Happy Parents' Day. Now we will welcome Miss Mitali Chawla and Miss Kasturi Jadhav to share and express their views on Parents' Day in Marathi. सुप्रभात. वेळ बदलते, काळ बदलतो, परिस्थिती बदलते, माणसं बदलतात, पण आई वडिलांचं प्रेम कधीच बदलत नाही. कारण ते प्रेम निस्वार्थ असते. जगातील सर्व पालकांना जागतिक पालक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. प्रत्येक वर्षी आपण पालकांचा दिवस साजरा करतो. उद्देश त्यांचे प्रेम, त्याग, प्रेमाची भावना जागृत करणे. आपण मोठे झालो की आपण जबाबदार, प्रेमळ आणि काळजी घेणारे मनुष्य बनतो. आमचे पालक महत्वाचे भूमिका निभावतात. त्यांचे प्रेम, आपुलकी आणि त्यांचे सर्व परिश्रम कित्येकदा कौतुक होत नाही. कौतुक करणे महत्वाचे आहे. हे निस्वार्थ पालकांचे उत्सव आहे, ज्यांना आपल्याकडे असलेले सर्व काही दिले आहे किंवा मुलींचा सुरक्षाही केली आहे. हे सत्य आहे की पालक नेहमीच आपल्या मुलांसाठी गोष्टी करतात आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची अपेक्षा नसतं. तथापि पालक दिन साजरा करणे हे आपल्या सोबत असलेले प्रेम आणि कौतुक परत करण्याचे प्रदीर्घ प्रवास सुरू करण्यात सोपा मार्ग आहे. एकदा खास डिनरसाठी वेळ काढत आहे की नाही, त्यांना एक साधे कार्ड पाठवणे किंवा ई शुभेच्छा किंवा अगदी छोटासा फोन कॉल सुरू करणे. आपण या दिवसाची आपल्या पालकांचा उत्सव साजरा करण्यासाठी जे काही करता येईल ते करणे सोपं आणि आवश्यक आहे. आम्ही कोविड-19च्या प्रसंगावर नियंत्रण ठेवत असताना आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना आपल्या प्रिय आणि प्रेमळ व्यक्तींचे मूल्य कळले आहे आणि आम्हाला आशा आहे की ही साक्षरता आपल्या पालकांच्या जागतिक दिनात सर्व मानवी कौतुक आणि प्रेम सह आपणास मदत करते. हे छोटंसं गुलाबचं फुल सगळं पालकांसाठी. धन्यवाद. पालक दिन हा 1994 मध्ये सुरू झाला. दरवर्षी जुलै महिन्याच्या 4थ्या रविवारी साजरा केला जातो. आई वडिलांचे प्रेम, त्याग, समर्पण याची जाणीव करून देणारे प्रेम भावना म्हणजेच पालक दिवस. पालक आपल्या मुलांसाठी संपूर्ण जीवन खर्च करतात. कठीण प्रसंगात देखील मुलांना चांगलं जीवन जगायला भेटावे यासाठी सतत प्रयत्न करतात. मुलांसाठी चांगले संस्कार व्हावेत म्हणून सतत प्रयत्न करत असतात. पालकांचा आपल्या मुलांवर खूप प्रेम आहे व ते आपल्याला जीवी लावतात. त्यामुळे आपल्या पालकांची जागा कोणी घेऊ शकत नाही. Happy Parents' Day to my loving parents. You are the ones who have taught me everything I know. You are the ones who have taught me to dream and to work hard for it. A PowerPoint presentation by Ms. Khushbu Singh on Parents' Day. My name is Khushbu Singh and I would like to say few words on Parents' Day. Parents' Day is the day to celebrate, recognize and uplift the important role of parents in raising children. Signed on October 14, 1994, at the time been increasingly self-centered, the resolution is a message to promote the importance of family commitment and parental responsibilities. Now, Parents' Day is celebrated every fourth Sunday of July. Why do we celebrate Parents' Day? The aim of National Parents' Day is to promote responsible parenting and encourage positive reinforcement by parents or for children. It goes the other way as well, as the day also celebrates the sacrifice of parents and the unparalleled bond of love between parents and their children. Parents are the precious gem in our life, without whom we cannot imagine our future. Our success in life, all the achievement we achieve, all the unconditional love and support we received from our parents are beyond the words. For our happy future, they sacrificed a lot with or without our knowledge. Even though we tried, our efforts are nothing
compared to them. What they provide us in our lives and still doing our every moment. Our mothers called without asking, "Have you eaten?" with all the care, and father's precious advice and guidance for our life and future can never go wrong. Parents are gems in everybody's life. Without the love and support of parents, a child cannot succeed in their life. From birth to childhood, our, our parents support us in every path of our life. They teach us lessons of honesty and sincerity towards others. They teach us to identify the good and the bad in our lives. They help us to follow our dreams and take care that we don't face any obstacles. The contribution of our parents in our life is uncountable. It is our responsibility to make them feel special, like they did and still doing in our life unconditionally. Through a thank you speech to our parents, we can let them know how much they mean for us in our life. What is the history behind Parents' Day? The United States President Bill Clinton started observing parents. माता पिता ईश्वर की वो सौगात हैं जो हमारे जीवन की अमृत धार हैं। आपसे ही हमारी एक पहचान है, वरना हम तो इस दुनिया में अनजान थे। आपके आदर्शों पर चलकर ही हर मुश्किल का डटकर सामना करना सीखा है हमने। अपने ही तो इस जीवन की दहलीज पर हमें अंगुली थामे चलना और आगे बढ़ना सिखाया है, वरना एक कदम भी न चल पाने से हम हैरान थे। आपके प्यार और विश्वास ने काबिल बनाया है हमें, जीवन के हर मोड़ पर आजमाया है हमें, वरना हम तो जीवन की कसौटियों से परेशान थे। आपने हमेशा हर कदम पर सही राह दिखाई है हमें, अच्छे और बुरे की पहचान कराई है हमें। आपने दिया है जीवन का ये नायाब तोहफा हमें, जिसे भुला पाना भी हमारे लिए मुश्किल है। आपकी परवरिश ने ही दी है नेक राह हमें, वरना हम तो इस नेक राह के काबिल न थे। आपसे ही हमारे जीवन की शुरुआत है, आपसे ही हमारी खुशियां और आबाद हैं। आप ही हमारे जीवन का आधार है, आपसे हम और आपसे ही ये सारा जहां है। Dear parents, you have always been my inspiration and my strength. I feel so blessed to come in this world as your child. Thank you for everything. Happy Parents' Day once again to you. Let me enlighten you today also with the biggest guru, that is the parent. The word guru, which is a combination of two Sanskrit words, where gu means darkness and ru means someone who removes darkness. This festival commemorates the goodness of spiritual gurus and teachers, as thousands of devotees worship and thank their gurus for enlightenment. The festival of Guru Purnima is celebrated in a very simple and spiritualistic way to seek blessings of Guru. Guru Purnima is also known as Vyas Purnima, as it is believed that on this day Ved Vyas, the author of Mahabharata, was born, who is a pioneer of Guru Shishya tradition. A mantra that is specifically enchanted during the prayer session of the day is, which will be chanted by Miss Soni Jaswal. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parama Brahma, Tasme Shri Guruve Namah. Very well said. Let's have fun time identifying the meanings of the emojis. This is a free time for the parents to guess and relax. Let's play a game. Guess, any idea? Yes, correct, joyful face. You have few more to go. At the count of 1, 2, 3, you can identify.
Yes, the first one is party face and the second one is the thinking face. This is the easiest one, isn't it? What it is? Dislike, and the second one is stop. This is also we are using in our day-to-day WhatsApp messages and all. Very good. And yo. What about this? Difficult. The first one is difficult, the second one is easy. The first one is hello face and the second one is like, which we do in Facebook, Instagram, everywhere we are using this. Thumbs up. What about this? Yes, vomiting face and freezing face. Oh my, this also we use. Face with horns and cool dude. One is easy, one is difficult. Mind blowing and good night. Instead of writing good night, we put the emojis, this one. What about this? Yes, embarrassing face and sneezing face. What about this? Angry face and crazy face. Thank you so much, parents, for your wonderful cooperation, and I hope that you liked the program.